इसमें पॉइंट ये है जो आर्गुमेंट भी हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा प्लीज क्लेरिफाई दिस कि आर्टिकल 187 speaks that matter pending before the Supreme Court wherein the complete justice can be done. Here the only problem is that whether complete justice can be done, Article 187, and the relief can be granted to a party which is not before the Supreme Court. This is the issue. वो complete justice का जो point है वो अपनी जगह मौजूद है आज भी, उस पे कोई कतगन नहीं है. Complete justice बिल्कुल होता है, but the providing complete justice between the 2 or 3 parties before the court is a totally different scenario than grant of relief to a party which is not before the Supreme Court, and the application for intervener has been dismissed on the ground that they are not proper or necessary party, not dismissed, not disposed of. जी disposed. आप इसमें एक बात और भी देखिए, Exactly ये है. So the subject matter, एक जुमला. Exactly, this is the point. बिल्कुल. In review, the review petitioners have raised this point that the party which is not before the court has been granted relief under Article 187, and in my view, this is the moot question involved here. Sir, मैं इसको, to be fair to the petitioners, they have raised 2 interconnected questions. One is that PTI was not before the court, and number 2, it was not even before the High Court. There was no prayer by the PTI. 184(3) में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, 185(3) में भी एक्सरसाइज. मैं चीज और सुन लीजिए जो मेरा इंटरप्रिटेशन मैं सर जो जजमेंट साइड करूंगा वो सारे 185(3). एक और चीज इसमें 187 एक्सरसाइज. जी, माय इंटरप्रिटेशन में यू एग्री, मोस्टली यू एग्री, एंड Sir, 99% I agree, 1% I disagree. My brother has raised the question that the case and matter. अब ये देखिए, इसको दोबारा देखिए. जी सर. For doing complete justice in any case. जी. In any case वो होता है जो केस ऑलरेडी 185 से आ रहा हो या आपके पास पेंडिंग. जी. और मैटर वो है जो कि उस वक्त सो मोटो जुरिस्डिक्शन था. वो मैटर है सो मोटो मैटर, इसलिए इसको डिस्टिंग्विश किया इन एनी केस और मैटर. और मैटर मीन्स सो मोटो एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन विच इज नॉट applicable now.